Okay. The next question is, we have a perturbation like this when Hp is equal to 2V naught by Ax, when x is from 0 to A by 2, and a constant potential, this V naught, from A by 2 to A. Again, this is the matter of integrations. So energy correction in 1 is equal to 2 by A from 0 to A by 2 sine square n pi x by A 2 V naught by Ax dx plus 2 by A integration V naught sine square n pi x by A by 2 to A. Again, put n is equal, find the integral and then put n is equal to 1. I am just going to write the result. What is the result we have? So our result is nothing but 3 V naught by 4 plus V naught by pi square. ये हमको रिजल्ट मिलेगा लास्ट में. हम इंटीग्रेशन करके टाइम वेस्ट करना नहीं चाहते हैं, बट ये जस्ट एक इंटीग्रेशन है, हम कर सकते हैं, इसकी करना कोई बहुत ये नहीं है, इसलिए हम ज्यादा इस पे फोकस, सिर्फ क्वेश्चन के प्रॉब्लम के कैसे टैकल करना है हम उसको डिस्कस कर रहे हैं. ओके, सो नाउ लेट्स मूव फ्रॉम infinite potential well to harmonic oscillator. Now we have a harmonic oscillator having potential this. We put the whole system in an external electric field. What is the shift in the energy? So जब हम किसी भी इस पोटेंशियल को सिस्टम को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो हमें पता है कि हमारा जो हैमिल्टोनियन चेंज होगा वो माइनस एच कट स्क्वायर बाई 2m डेल 2 बाई डेल एक्स स्क्वायर प्लस हाफ के एक्स स्क्वायर एंड माइनस क्यू ई एक्स, ये हमारा चेंज होगा हैमिल्टोनियन में. हम इस क्वेश्चन को दो मेथड से करते हैं. फर्स्ट, बिना परटर्बेशन जाने भी इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, और सेकंड करेंगे जब हम परटर्बेशन को जानेंगे, परटर्बेशन से कैसे करें. सो हमें यहाँ पे हमारा करेक्शन दिख रहा है पोटेंशियल में. सो करेक्शन क्या है? हाफ के एक्स स्क्वायर माइनस क्यू ई एक्स. तो अगर हम हाफ के कैंसल कॉमन लें सो अवर एक्स स्क्वायर माइनस 2QE by k into x. This is half k x square minus 2 into x into QE by k plus QE by k whole square minus QE by k whole square. So this finally is like x minus QE by k whole square. Half k is there. Minus q square e square by k square. This 2 is there and k. If I just change a variable, this x minus QE by k is equal to y. So d over dx is nothing but dx, is equal to del y over del x into del over del y. So you see del y over del x, this del y over del x is equal to 1. So if you make this change of variable, our partial derivative del by del x is not going to be changed, just shift from del by del x to del by del y. So we have just our Hamiltonian now is going to be minus h cut square by 2m del over del y square plus half ky square minus qe square by 2m omega square. K is equal to m omega m square, I am putting. So this is just our in general harmonic oscillator Hamiltonian, and this is a shift in the energy. So our energy is going to be energy with this n plus a half h bar omega minus this shift qv square by 2m omega square. So this is our first set of correction in the energy. Now let's use our method 2. And I am just claiming this is the second order perturbation, second order change in energy. There is no any change in first order. Why I am saying this line? Just wait,
a minute, it will be clear. Okay, so HP is nothing but minus QEX. So the first order perturbation En1 is just N psi N, sorry, N HP N. So when you put this HP, as I said, N, you can use this as M and this is N. So we get two delta function, delta N comma M plus 1, as I resulted in the very beginning, N comma M minus 1. और ये इक्वल तभी हो सकता है जब n इज इक्वल टू m प्लस 1 हो, ये नॉन जीरो तभी होगा जब n इज इक्वल टू m प्लस 1 है। बट जब हम निकालते हैं फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन, तो ये जो हमारा वेव फंक्शन है, दोनों हमारा ग्राउंड स्टेट वेव फंक्शन है, अनपर्टर्ब्ड वेव फंक्शन है, इसलिए ये बराबर नहीं हो सकता है। सो फर्स्ट ऑर्डर परटर्बेशन में एनर्जी जीरो होगी। सो वी हैव टू गो टू द सेकेंड ऑर्डर परटर्बेशन। फर्स्ट ऑर्डर इज जीरो। नाउ लेट्स गो टू द सेकेंड ऑर्डर। So for second order, I just wrote the formula when I discussed the concept as summation over n Hamiltonian h taking prime p with n. I am fixing one state as 0 square by E0 minus En0, and this n is not equal to 0. This I already use when I derive the when I discuss the concept. Just please look at the concept once. ये हमारा सेकेंड ऑर्डर चेंज इन एनर्जी था। तो जब हम इसका यूज करेंगे 0 HP(n) स्क्वायर का, सो ये हमारा, इसको हम शॉर्टहैंड नोटेशन n लिखते हैं, नॉट इक्वल टू 0, अदर ऑल द n's आर देयर, HP 0n mod whole square. What is E0? Half h bar omega minus what is En0? This is nothing but n h bar omega minus half h bar omega. This is like n plus half h bar omega. So n h bar omega plus half h bar omega. So these two going to be cancels. So finally we have sum over n that is not equal to 0. All n's are there. H0n, which is p square divided by minus nh cut omega. What is this H0n? H01, use the formula for that n xn. When we use this formula and a square means x square formula, we get this is as sum over n q square e square by 2 alpha square delta of n comma n by minus nh का टू। और अगेन इसको नॉन जीरो करने के लिए n का सिर्फ और सिर्फ एक वैल्यू पॉसिबल है, दैट इज n इज इक्वल टू 1। वैसे भी यहाँ हम n इज इक्वल टू 0 नहीं सकते, n का सारे वैल्यूज, बट n के अगर 0 छोड़ के लेंगे 1 2 3 अदर वैल्यू पॉसिबल है ही नहीं, सिर्फ n इज इक्वल टू 1 पॉसिबल है। सो हम सिर्फ n इज इक्वल टू 1 रखेंगे और हमें q स्क्वायर e स्क्वायर बाई 2 अल्फा स्क्वायर इंटू h कट ओमेगा, n इज इक्वल टू जस्ट 1 विथ अ नेगेटिव साइन माइनस। Put the value of alpha. I already stated what is this. Alpha is nothing but root under m omega by h cut. Just put there and find. You see, we get the same shift in energy minus q square e square by 2m omega square. Just do this. If you have problem, just comment in the comment section on YouTube or in my Instagram account. I will again explain how we move from this to this. But this is straightforward. When we find the expectation of x square, you get this. You end up with this result. Okay. So I hope this is the final question for today. So now we are going to discuss the degenerate perturbation theory. One question. Next time I will start with some other questions also and some questions on variational principle and all. So we have this question: two-dimensional infinite potential well. This is the normalized wave function we have. Now that we have a perturbation HP in x and y in the both direction x and y from 0 to a by 2. What is the correction in the first order? Excited states. Because excited states are going to be perturbed.
because we have energy as nx square plus ny square pi square h cut square by 2ma square. So the ground state 1 is just nx1 ny1, so 2 pi square h cut square by 2ma square. First order excited states are nx is equal to 1, ny is equal to 2, and nx is equal to 2, ny is equal to 1. Both the cases you get 5 pi square h cut square by 2ma square. So these first excited states are doubly degenerate. So we use the secular determinant matrix to find this matrix H11, H12, H21, H22. And this H11 is nothing but phi 1, H phi 1. What is phi 1? The wave function associated with this one. This I am using phi 1, and with this I am using phi 2. So when I put nx equal to 1, ny is equal to 2. This is the first. Put nx equal to 2, ny equal to phi 2. So phi 1, h phi 1. So the integration is like just 4 v naught by a integration 0 to a by 2 sine square pi x by a sine square 2 pi y by a dx dy. And you just find the integration, you will get v naught by 4. And see, when you do h22 phi 2 h phi 2, you get this sine 2 pi x by a sine pi y by a. So x और y में ये सिमेट्रिक है, so रिजल्ट हमारा सेम आएगा. So this is same as h22. Similarly, when you find h12 is equal to h21, ये आएगा 16 v naught by 9 pi square. Just 1, 2, and this inside this hp, just constant terms are there. So let lambda is corrected energy. When lambda is corrected energy, then our secular determinant is h11 minus lambda, h12, h21, h22 minus lambda. Determinant of this is going to be 0. So v naught by 4 minus lambda, 16 v naught by 9 pi square, 16 v naught by 9 pi square, v naught by 4 minus lambda taking determinant is equal to 0. So we get v naught by 4 minus lambda whole square minus 16 v naught by 9 pi square is equal to 0. So v naught by 4 minus lambda square is equal to 16 v naught by 9 pi square whole square. So v naught by 4 is equal to plus minus lambda plus minus 16 v naught by 9 pi square. So lambda is equal to v naught by 4 minus plus 16 v naught by 9 pi square. You just take this v naught by 4 common. So v naught by 4 common लेंगे तो 1 minus plus और plus minus कोई फर्क नहीं पड़ता है इससे. We have just 64 v naught by 9 pi square, and you see this is our the correct solution. Okay, so correct. Thank you. Before closing, just let me discuss about the, as I mentioned in the beginning, that people are using this trick that energy is going to be perturbation into perturbed length by total length. ये ट्रिक हमने देखा बहुत सारे लोग इसका यूज करते हैं कि जब हमने 0 से a by 2 तक एक पोटेंशियल v नॉट लगाया है, सो हमारा फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन सीधे निकालते हैं कि v नॉट perturbed length is a by 2, total length is a कैंसल, v नॉट we get v नॉट by 2. मेरा ये क्वेश्चन है आपसे, जो भी इस वीडियो को देखें या इस ट्रिक का यूज कर रहे थे अब तक, अगर हमने इस परटर्वेशन को 0 to a by 3 लगाया तो हमारा एनर्जी होना चाहिए En1 is equal to v नॉट a by 3 by a कैंसल v नॉट by 3. क्या ये एनर्जी आपको आती है या नहीं आती है?
मैंने आपको यूजुअल प्रोसीजर बताया है कि हमारा कैसा भी पोटेंशियल कहां से कहां तक भी होगा, उसके लिए आप क्या प्रोसीजर यूज करोगे, जस्ट रूट अंडर 2/a 0 to a/3 sin square n pi x by a/3 and this is v naught. Just find the integral and see whether this is a v naught by 3 or not. I am 110% श्योर ये गलत होगा, ये आंसर नहीं आएगा। हाँ, अगर आपने परटर्वेशन को a बाई n लेंथ पे लगाया, यहां पे लोग कैसे डिराइव करते हैं फॉर्मूलाज, ट्रिक लगाया है कि अगर आपने लेट्स से सम 0 to a बाई n तक लगाया है और ये a है, और हम तब कहते हैं कि ओके हमारा करेक्शन क्या होगा, तो यहाँ पर आंसर आता है कि v नॉट a बाई एन बाई सॉरी ए कैंसल v नॉट बाई एन। अब n को तुम 3 पुट करो 4 पुट करो, तुम्हारा आएगा भाई, वहां पर हमारा साइन स्क्वायर n पाई एक्स बाई ए होता है, और लिमिट जब a बाई एन होता है तो ये n कैंसल हो जाते हैं। जब आप a बाई 3 लोगे तो ये 3n को कैसे कैंसिल करेगा, इसलिए जो v नॉट बाई एन का जो फॉर्मूला आप लगाते जा रहे हो ये गलत है, किसी भी क्वेश्चन में आंख बंद करके नहीं लगा सकते हैं। मेरी बातों को सही नहीं मानिए, आप जस्ट गो एंड फाइंड फॉर 0 to a/3 क्या ये फॉर्मूला जो हम ट्रिक लिख रहे हैं ये वैलिड है कि नहीं है। अगर है जस्ट कमेंट, सॉल्यूशन आप हमको भेज सकते हैं। अगर नहीं है तो आप खुद सोच सकते हैं कि कहां तक ये फॉर्मूला वैलिड है, कहां तक ये ट्रिक वैलिड है। इसलिए हमने किसी भी क्वेश्चन को ट्रिक से नहीं किया है, तो यूजुअल रूल है, जैसे करना चाहिए वैसे हमने किया है। थैंक यू। नेक्स्ट टाइम we will again discuss some more problem. Also I will include some problems on variational principle. आज हम नहीं कर पाए, so लगभग इसी टाइप के प्रॉब्लम्स टाइम इंडिपेंडेंट परटर्वेशन में आते हैं। ओके, थैंक यू, आई विल सी यू सून, टाटा।